Today, we shall see how taxes are determined into the sales order process. Okay, this tax determination from the sales standpoint. From the sales standpoint, what are the customizations that are being carried out? We'll see. The tax determination parameters are tax category, tax type. First, we will define tax category, then tax type, then assign this tax type to plant, then define customer and material taxes. This is the same step, we can skip. And lastly, we have to make a condition record for the respective tax condition. Before we get into this, let's try creating a sales order. And in the sales order, we'll see how taxes are being carried out with condition type MWST. Here, MWST condition type. Let's try creating a sales order. BA01, order type OR, sales transaction, distribution channel, division. Enter. 900201. Tax date, material YPK1 601. Enter. Continue. Let's see this conditions. As we can see here, we got MWST output tax type, which is 18%. Instead of this condition type MWST, we shall try some other term with ZWST, which is a common universal for every tax type. Let's get into this customization area, which is SPRO. Here, firstly, we have to define a tax category. We can go via transaction code OVK3 or via path. SPRO, IMG reference, sales and distribution, basic functions, taxes. Define tax determination rules. We need to define tax category, right? We'll go over transaction for OVK1. This is, I guess, in finance. No, same tax category. Define tax determination rule. Execute. Define tax determination, which is tax category. Sorry, define tax category OVK3. Nation OVK3. Here, as in the sales order, we can see MWST. Instead of this MWST, we shall try with our own. Let's try it. Instead of MWST, we'll go with, copy this, we'll make this ZWST. Liable for tax YBK1. Okay, ZWST already exists. YBK, YBKT. Tax category OVK3. Tax class.
Let's go with the standard one, MWST. As you can see here, this is standard one, which is predefined by SAP. Here we have MWST. If I want to copy this standard one, ZWST, somebody has already copied, enter, and an entry already exists with the same key. So let's try with some other term. New entry. Sorry? YWST. YWST. Tax classification one. Description. Example for tax YWS. Okay, an entry does not exist. Check entry. Okay, this is the condition report we have to make. OVK1 mention. Okay, before I make this MWST, let's copy this MWST condition report. Let's copy this. Let's copy this MWAS. नहीं आ रहा. Let's copy this MWAS to YWAS and the class classification. Let's make this as YWST. Okay, tax classification define करना पड़ेगा. It's PRO. IMG reference. Financial accounting new. Financial accounting global setting. Tax on sales and purchases. Basic setting. Calculation. Check calculation procedure. ये सारा हमें डिफाइन करना पड़ेगा. बेसिकली इट्स एन इंटीग्रेशन पॉइंट बिटवीन FI एंड सेल्स. अगर से हम यहाँ पे सेल्स की तरफ से कोशिश करेंगे तो the system is not allowing tax category. If I want to create a category OVK3 nation OVK3, this condition type MWST, I'll try to copy this. If I try to with YWST, okay, फाइनेंस वाले यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन करेंगे, तब कहीं जाके हम यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकेंगे. अगर से हम अभी कस्टमाइजेशन करने जाएंगे तो फाइनेंस में कुछ सेटिंग है, उसको भी करना पड़ेगा. Then if I try to go with tax types, which is OVK1, nation OVK1, India, IN, which is MWST, the tax category. Then we have assign this. ये हम already plant के साथ already assign हो चुका है ये OX10 nation OX10 YBK1 here country India, the country के साथ already assign हो चुका है, which is here India, and the tax category is MWST. इसको कैसे करेंगे टैक्स कैटेगरी क्लासिफिकेशन नेशन ESPRO IMG reference financial accounting tax and policies basic setting
check calculation procedure, define condition type. Before we make this condition type, let's try maintain access sequence. Continue. MWAS standard one, MWST. इसको हम कॉपी कर लेंगे. Let's make this as YWST. Copy all. Continue. YPK1. Select this. Go for the access. Select this. Check for the fields. Save it. FI tax classification. हमने अभी एक एक्सेस सीक्वेंस डिफाइन किया है जहां पे टैक्स क्लासिफिकेशन है विथ YWST. इस एक्सेस सीक्वेंस को हम कंडीशन टाइप के साथ असाइन करेंगे. डिफाइन कंडीशन टाइप स्टैंडर्ड वन MWST. MWS होगा. Okay, let's go with MWAS, which is alternate. Let's copy this. Let's make this as YWAS and replace this access sequence with YWST जो हमने अभी access sequence define किया. We are done with this one condition type which is YWAS. हमने first YWST access sequence define किया first. Second हमने YWAS condition type define किया. इस कंडीशन टाइप के साथ YWST भी है. ठीक है, इस कंडीशन टाइप का. नेक्स्ट थर्ड स्टेप, लेट्स सेव दिस. क्रिएट FI tax condition type YWAS for YPK condition type. Next third step, define procedure. ओके, स्टैंडर्ड हम जो लेते हैं अभी तक टैक्स INN, ये स्टैंडर्ड है. हम इसको YPK I कर देंगे. YPK I एंटर. Copy all 33 conditions. Let's select it. Go for the control tab. यहाँ पे हमारा कंडीशन टाइप ऐड करेंगे 630 640. न्यू एंट्रीज 630. We have condition type as YWAS. Enter. Save it. F5 tax procedure for YPK1 with reference YPK I. Save it. Now let's go back. Close. Let's get into this our sales area. Sales and distribution, basic functions, taxes, define tax determination rule. IN हमने जो MWST के रिप्लेस करके हमने MWAS किया था, उसको रिप्लेस किया था YWAS. Let's try YWST. Look at this answer. Taxes, tax category,
separate financial accounting view, taxes, basic calculation, define check calculation, assign calculation procedure, condition type, YWAS, condition type, access sequence, YPQ, IM, FTXP, nation, PXP, country, IN, tax code, A, and tax category in SAP, we use in pricing process. In terms of the effect, it is called a tax category. It should be assigned to a particular country only then the tax category used in customer or material. Okay. Tax category is linked to the country. OVK3, nation OVK here,
tax category IM, V slash create YWAS. Position RB801, copy YBK1 01 and it YBK1, copy all, let it go for the control, condition type MWAS, YWAS, okay, MWST, SPR, IMG reference, financial accounting law, taxes, basic settings, check calculation, check condition type, define condition type, YWAS, we have specified condition type, details, YWST, define procedure, YPK, ओके मिस्टर शिवम, आई गिव अप। ओके, यहाँ पे हमने
ये फाइनेंस वालों से कुछ टैक्स कैटेगरी डिफाइन करनी होती है. If I want to go with MWAS, but instead of MWST or MWAS, we can go with copy control YWST and YWAS. हमने डिफाइन किया, बट यहाँ पे अगर से हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं OVK3 में, द सिस्टम नॉट अलाउइंग, कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे जो सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पे. MWST कंडीशन टाइप नेशन B/08 नेशन B/07 okay, access sequence /B/06 MWST okay, let's go with MWST. I will copy this MWST. We'll copy this as YWST. We'll make access sequence as YWST. YWST. Let's copy this. Okay. अभी ट्राई करते हैं YWST /MOVK1. Now this okay. हमने प्राइसिंग प्रोसीजर सेल्स में प्राइसिंग प्रोसीजर में MWST जो था हमने उसको कॉपी कर लिया. कॉपी करके इसको MWST के साथ रिप्लेस कर दिया. देन सेव इट. ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया विथ YWST. सेकेंड, फर्स्ट हमने टैक्स कैटेगरी डिफाइन किया. नेक्स्ट दिस टैक्स टाइप वी नीड टू डिफाइन टैक्स टाइप OVK1 /N OVK1 IN यहाँ पे YW अच्छा /N OVK3. टैक्स कैटेगरी इज नथिंग बट किसी like there are certain public sector companies who are exempted from the tax. यानी डिफेंस है, मिलिट्री है, नेवी है, BHL है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है. वो कंपनीज को कुछ हद तक वो लोगों को टैक्स फ्री रहेगा. देयर कुड बी 50% टैक्स फ्री और 70% टैक्स फ्री और 100% टैक्स फ्री. हम यहाँ पे कुछ ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं. 0 मतलब एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, 1 मतलब लायबल फॉर टैक्स. यहाँ पे ऑलरेडी MWST कुछ 0-1 है. यहाँ पे 0 and 1. 0 means no tax for them, 1 means liable for tax. अगर से हम इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, या नहीं तो हम स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं. विच वन यू सजेस्ट? अभी YWST दिया ना, तो या ये करेगा या कोई दिक्कत नहीं सर? Okay, we'll try with the same functionality. We'll keep as it is MWST. Go back.
हमने OVK1 में जैसे था वैसे ही रखा हमने MWST। OVK3 में रखा था, OVK1 में अपन YWST किया, OVK1 में तो MWST। MWST ये ट्रांजैक्शन कोड। फर्स्ट टैक्स कैटेगरी किया हमने OVK3 में, देन हमने टैक्स डिफाइन किया OVK1 में। नेक्स्ट ये जो टैक्स कैटेगरी एंड टैक्स है ये प्लांट के साथ असाइन होगा। इसका ट्रांजैक्शन कोड OX10 OX10 YBK1। कंट्री हमने डिफाइन किया इंडिया। यहाँ पे डिफाइन टैक्स टाइप IN के साथ हमने YWST किया। अभी जब कभी हम कस्टमर क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे MWST नहीं आएगा, YWST आएगा। द रीजन बिहाइंड इज कस्टमर मास्टर डाटा एंड मटेरियल मास्टर डाटा आर बीइंग कनेक्टेड विद दिस प्लांट के साथ असाइन है। इसके लिए MWST आता था अभी तक, अभी YWST आएगा। एक मिनट देखते हैं अभी। If I want to create a material slash n MM01 YBK1 tax 1, what, enter, continue, continue, enter, enter। यहाँ पे देखो अभी आप देख सकते हो YWST। ये इसलिए आ रहा है कि हम सॉरी YBK हमने एक टैक्स कैटेगरी एंड टैक्स टाइप हमने इस प्लांट को असाइन किया विच इज YBK1। सो नाउ इट्स YWST। अगर से हम 0 कर देंगे तो इस मटेरियल पे टैक्स नहीं लगेगा, अगर से हम 1 कर देंगे तो टैक्स लगेगा। एंटर। टैक्स कैटेगरी आउटपुट डज नॉट डिफाइन क्लासिफिकेशन। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। OVK3 में कॉपी करता है ना, स्लैश एन OVK3 WST WST, एंड इसको YWST कर लेते हैं। स्लैश एन MM01 YBK1 tax 1। select all input 3। enter, enter। Okay, here YWST 1, enter। Okay, tax category output tax does not define in the classification। Fine। और छोटा सा काम बाकी है यहाँ पे कस्टमर के अंदर। असाइन डिफाइन कस्टमर एंड मटेरियल टैक्सेस OVK3 एंड OVK4, देन डिफाइन टैक्स डिटर्मिनेशन। ये 2 पॉइंट्स करेंगे हम। भाई सॉरी, अभी करेंगे या कल करेंगे, मतलब अच्छा। फाइन, नो प्रॉब्लम। ये मुझे थोड़ा सा FI के साइड अभी जो एरर्स आ रहे हैं ना वो एक बार हाँ फिगर आउट करना है। हाँ, अगर से आप तो ओके है तो अपन कल, नहीं एक्चुअली मेरा वाइफ का अभी थोड़ा सर्टिफिकेशन का है, तो शी वांट दैट लैपटॉप, फाइन, ठीक एक्सटर्नल है, नो प्रॉब्लम, सर्टिफिकेशन कुछ है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में। ठीक है।
कल करते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके कल करते हैं ना ओके इस वाले चलो, में। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके टेक केयर, बाय। थैंक्स थैंक्स।